I think we have a lot of participants in the meeting already. So we'll start because we're already running late. First of all, hello, hi, my name is Kritika Pandey. I'm the GDSC lead of SIS GST for this year, that is 2023-2024. And this is the first major event that is taking place by Google, which is the Google Cloud Study Jams. Every year, we host this event for 30 days. It is something that we've been doing for the past 5 years now. And this year as well, we are doing it with our facilitator as Anamika Nivase. She is a final year student from electronics and computer science engineering, and she's been working on this since the last 2 years now. So she has a keen interest in the cloud computing, and she's been practicing Google Cloud since last 2 years now. So I hope you all gain a lot of knowledge and you all understand the basic concepts of Google Cloud with her. She'll be taking on further and she'll be explaining about how to create a skill boost account and how to register for Google Cloud. What are the important aspects of Google Cloud and why Google Cloud is important? So she'll be explaining all of this to you. Apart from that, we'll be circulating a form in this हेलो in the एवरीवन इज एवरीवन अलाइव आई मीन नींद हुई है सबकी उठे हो सब लोग कल से कॉलेज वापस शुरू हो रहा है इज एवरीवन देयर कैन Yes, आई yes, गेट उठे सब. एटलीस्ट अ इमोजी शार हियर इफ नॉट if you are unable to unmute your mics okay, we do have a lot of amazing people who are amazing we are right now at 92 and I guess we are good to go with the session so we'll start with it firstly good afternoon to you everyone. Thank you for joining us in such great numbers today. I'd like to extend a heartfelt thanks to Kritika Pandey, our lead for the year 2023-24. I guess due to some technical issues, she's unable to be here right now. But I would like to thank her for choosing me and believing me to be the cloud facilitator for this year. Let me start by assuring you that this session won't be one of those lengthy ones. 1 घंटा 3 2 घंटा 3 घंटे का लेक्चर नहीं होगा वी वैल्यू योर टाइम सो वी आर कीपिंग इट वेरी क्रिस्प टू द पॉइंट इट विल बी max to max 50 minutes so let's take a quick look at the agenda for today. So the very first one is what is Google Cloud. So we'll be understanding what Google Cloud is, its significance in today's tech landscape. Moving ahead to what exactly is Google Cloud. Why Google Cloud? Discover the compelling reasons why Google Cloud is a game changer. Then moving ahead to understanding what is Google Cloud Study Jams program. Then understanding the two pathways that we have for this year, that is the generative AI and the Google Cloud Skill Boost. Moving ahead to the registration process, what's in it for you? What will you learn? How will you uncover the rewards? How to unleash your invaluable learning? Then moving ahead to how to exactly create a skill boost account. So we will be creating in front of you live skill boost account so you have a better idea of exactly how to create the skill boost account. That is the agenda for today's session. So shall we begin? Yes. Yes. Thank you. In this entire agenda run, I forgot to give you my introduction. Myself, Anamika Nivase. I'm a final year student from ECS. I have served last year as the secretary for Google Developer Students Club, and this year I got the opportunity to facilitate for one of the most talked Google Cloud programs. So I'm more than happy to be here and to be a small part of your learning journey. Now, moving ahead to what is cloud. Can any one of you unmute and try to share
according to your understanding what is cloud, because I'm pretty sure a lot of you have a good understanding what is cloud, because cloud is something that we use very extensively in today's life. Any one of you, you may raise your hand, or if you want to unmute or put it in chat, you're free for it. Anyone? I hope you guys have the access. Yeah, sure. Please unmute yourself, Aryan. Are you able to unmute yourself? Or maybe you can put it in chat if that's possible. Anyone? Okay, I think. Yes, Aryan, I can see you've raised your hand, but are you able to unmute? Ayush, can you please give give them the Yeah, access? yeah. I think they have it. Someone unmute. Yeah. कंप्यूटर की Yeah. कंप्यूटर्स को क्लाउड से करने को क्लाउड कहते हैं. Can you please repeat? I think I've missed it due to my speaker issue. Can you please repeat? The कंप्यूटर di- के सारे Yeah, go ahead. कंप्यूटर के सारे फैसिलिटीज को क्लाउड से करने को क्लाउड कंप्यूटर कहते हैं. Okay, you're almost there. Anybody else wants to attempt? Yes, yes. The digital platform where we can share our storage, or store our storage, or our data files. Correct, correct. Both of you are almost right. Yeah, that is what is cloud. So, cloud is like an invisible genie that stores your data, runs your application, makes everything accessible from anywhere. It's the backbone of today's tech world. So, to give you an example, when you send your emails, stream videos, or scroll through your social media feeds, you're actually tapping into the cloud because that content is not stored in your device. You dynamically check it in आम्ही real हे time. केलं अरे केलं आई खरंच Guys, अरे मग आता please mute yourself. Yeah. So, ऐसे डिस्टर्ब होता है सो प्लीज ध्यान रखिए या so the content isn't saved directly in your device, right? It is dynamically fetched in real time from the cloud servers. Now moving ahead to why Google Cloud. So you might be aware there are tons of cloud vendors, one of which is Google Cloud Platforms. Another very well known is Microsoft Azure. Then we have AWS, that is Amazon Web Services. Then there is IBM, Oracle, and DigitalOcean, and many more. But why Google Cloud? So I think this, Abhishek, can we move ahead to the next slide? Why Google Cloud? So I think it is very self-explanatory that it offers global reach, cutting edge technology, top-notch security, which means your data is in the safest hands possible. Scalability is one of the factors. Be it startups or corporations, all the resources in the cloud platform, Google Cloud Platform, are easily able to scale up and scale down, making it a powerful, innovative, and a secure choice for businesses. Moving ahead to understanding what Google Cloud Study Jams is. That is the next slide. Uh, if I'm sure many of you have, I think 30 to 40% of you have already completed this course last year, or maybe even before that. But for those who are new to what exactly is Google Study Jams, so it is a gateway to hands-on learning with Google Cloud technologies. It is an engaging and a well-guided course where you'll discover the ins and outs of cloud computing, data analytics, and AI.
To state it out very clearly to you, it is a course where you will be provided with labs to complete. You have to complete the labs by reading the instructions which will be given in the particular lab. So basically, instructions padna hai one by one. You have to understand the instructions, and at the same time you have to perform the lab. And while you perform the lab, you have to also tackle some quizzes. You have to do some quizzes to reinforce your understanding. So Google Cloud Study Jams is a fantastic way to gain practical skills and knowledge, wherein whether you're a newbie or a seasoned pro, it doesn't need any sort of prerequisites. As I said, it is a well documented course. You have to follow it step by step. Now, moving ahead to the two pathways that we have for this year, I want everybody to take a note of this. This year, we have two pathways. The first one is generative AI, and the second one is Google Cloud Skill Boost. You have to complete both the pathways to be termed as someone who completed the Google Cloud Study Jams. I repeat, you have to complete both the pathways and not one. You have to complete both the pathways to be termed as Google Cloud Study Jams completed. And the deadline for the completion of the course is 30th October 2023. I think I'm pretty much clear about what are the pathways for this year and what is the deadline for this year. So talking about generative AI is a track where you'll focus more on artificial intelligence. You have total 7 labs in generative AI, whereas in Google Cloud Skill Boost, it is the foundation for cloud computing. You'll actively use the cloud interface. You'll learn how to create machines and all the basic fundamentals there. So you have approximately 37 labs in Google Cloud Skill Boost. Okay. Now moving ahead to the timeline. Again, I would like you all to take a screenshot of this slide because the deadlines are going to be very strict. We as the GDSC of SIS GST cannot tweak the deadlines for you as these deadlines are directly from the Google itself. So it isn't in our hands to do anything if you miss any sort of deadline. So the registration starts from 25th September. And the registration ends by 26th night, that is 11:59. Okay, again the registration starts on 25th of September, that is tomorrow, and the registration ends on 26th. After that, you'll receive a mail wherein you will get your code to access the cloud courses, and on and onwards from 3rd October you can start with your cloud courses. Okay, and the deadline to complete all the courses, that is both the pathways, generative AI and the cloud foundation, is 30th October. Am I clear on all the deadlines? Just give me a thumbs up. Yeah, great. So I will just repeat for everyone. The registration starts on 25th September. Registration ends on 26th. Cloud journey starts on 3rd October. That is 3rd October से तुम officially cloud के courses करना शुरू कर सकते हो. And the deadline to complete all the courses, that is both the pathways, it is 30th October. Again, just to mention, ये सारी deadlines Google से आई हुई है. तो इफ यू मैसेज अस पर्सनली और एनीवेयर की डेडलाइन थोड़ा ऊपर नीचे कर दो, घर पे ये था, घर पे वो था, ये सब नहीं हो सकता because these are directly from Google. Now moving ahead, Abhishek, to the next slide. So what's in it for you? So of course तुम लोग पूछोगे कि क्या मतलब मुझे ये सारी चीजों में क्या एग्जैक्टली सीखने मिलेगा. तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगे. जो लोग न्यूबीज है, जिन्हें बिल्कुल भी क्लाउड कंप्यूटिंग की आइडिया नहीं है, they will understand how exactly all these things function. तुम्हें थियोरेटिकल नॉलेज से लेके प्रैक्टिकल नॉलेज तक सब कुछ मिलेगा. You will be getting approximately 47 to 50 labs. Are you understanding the weightage of it? जो लैब ऐसे अगर तुम बाय करोगे ये कोर्स को ऑनलाइन, तो तुम्हें $100 का पड़ेगा ये कोर्स.
बट अगर तुम ये एक महीने में कर रहे हो तो सेम कॉस्ट $100 का तुम्हें अभी एब्सोल्युटली एट जीरो कॉस्ट मिल रहा है. So you're going to get the theoretical knowledge, you're going to get practical knowledge, and all free of cost. So I think it is a win-win situation here. ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी opportunity है to learn about cloud computing, to interact and engage in the interface, and to understand all the fundamentals of cloud computing. And of course, while you complete the batch, while you complete the quest, while you complete the pathways, you will get one of the batches displayed on the screen, that is the completion batch, and you can flaunt these batches on your social media profiles like LinkedIn. Now moving ahead to the best part, those who know, the cherry on the cake, I would say, I would actually say the whole cake. That is the goodies that Google gives out every year. So for this year, they haven't actually mentioned what exactly will be the goodies, but these are few of the examples of what you might get, considering what we got last year. So you might get a t-shirt, Google Cloud t-shirt, Google Cloud bag, a water bottle, pack of stickers, some swags, and many more things. So yeah, these are the goodies for this year. I hope, if not the learning or anything, but goodies definitely got you excited. Moving ahead to the next part. Yeah, here are few of the instructions that I would like to give you again. No deadline extensions after 30th of October for the course completion, and after 26th of September for filling out the registration forms. Okay. We as GDSC of SIS GST will give our 100% कि maximum लोग हमारे यहाँ से course complete करें, so that we will be termed in the tier 1 for the Google Cloud Study JAMS program. So we will be splitting you guys into a small groups for learning, that is groups of 20. तो आप सब लोग को 20 ग्रुप में स्प्लिट किया जाएगा, एंड हमारे जो क्लाउड वॉलंटियर्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग कोऑर्डिनेटर्स हैं, जेवायचं आहे तुझा म्हणजे आता कुठं 12:30. काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ. या तो फिर तुम्हें 20 के ग्रुप्स में स्प्लिट किया जाएगा, एंड यू विल बी असाइन्ड वन क्लाउड कंप्यूटिंग कोऑर्डिनेटर who is well versed in cloud computing fundamentals and knows how to exactly be in the interface and knows exactly what you have to do, and he is well efficient in solving your doubts, so he will guide you in completing your course. Okay, now okay, the account creation part I will leave it to Abhishek. He will take care of it to explain it to you. Limited registrations. Okay, so this point is very important. So Google has given each college, just like us, 150 slots. Okay, so हर एक college को 150 seats मिले हैं. 150 students can participate in the Google Cloud Study JAMS, and 150 students can complete the course. But there's always a but. Only top 80 performers, जो पहले 80 performers है, उन्हें ही goodies मिलेंगी. The rest of the people will just be given the access to complete the course. Only top 80 people, first 80 people who complete their courses will be given the goodies. Am I clear on this? So we will get total 150 seats. 150 seats में से 150 लोग course complete तो कर सकते हैं, but goodies पहले 80, that is first 80 people will only be rewarded with the goodies. I hope I'm clear on the instructions. Now I would like to ask Abhishek to kindly explain the students about how to exactly create the Skill Boost account. Am I audible? Hello. Yes, you're audible. So firstly, we will have to create a new Google account. It is mandatory.
तुम लोग कोई ओल्ड अकाउंट मत यूज करना. लाइक इट इज मैंडेटरी टू यूज टू क्रिएट अ न्यू गूगल अकाउंट. So one way to create a new Google account is we will click add another account in the profile section. Firstly, we'll click on our profile. Then we will click on add another account. Then from here choose create account. तुम लोग को पता होगा तो भी मैं बता दे रहा हूँ. For my personal use. Then write the details, name, surname, and all. Write your birth date. Here write your new Gmail name, username, right? So I'm writing here Abhishek T. New. Write your password. Use a password that you'll remember forever. रिकवरी ईमेल डाल दो. अगर वो उसका पासवर्ड कुछ फॉरगेट हुआ तो रिकवरी ईमेल से तुम लोग रिकवर कर सकते हो. फोन नंबर. एक फोन से भी ऑथेंटिकेट करके रखो क्योंकि बाद में काम आता है. Agree the terms and conditions and all. गूगल अकाउंट क्रिएट करने के बाद स्किल बूस्ट हम लोग क्रिएट करेंगे उससे ही. तो ये क्रिएट हो गया मेरा गूगल अकाउंट. As you can see, Abhishek T new T. So now we will go to the skill boost platform and create a like a login with that new Google account. लॉगिन के लिए इधर ज्वाइन क्लिक करना है हम लोग को. इधर एक ऑप्शन है साइन इन विद गूगल. इधर क्लिक करना है. लाइक तुम लोग साइड बाय साइड भी फॉलो कर सकते हो. अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो मेरे को बता देना. फिर इसके बाद जो तुमने नया गूगल अकाउंट बनाया था उधर क्लिक करना है उसको. स्किल बूस्ट में ज्वाइन क्लिक करना है. फिर उसके बाद नया जो गूगल अकाउंट है उसको क्लिक करना है. क्लिक आई एम नॉट अ रोबोट. एक्सेप्ट. तो अकाउंट बन गया. इधर तक सब आ गए. आप मेरे को बता दो फट से. लाइक इसके बाद एक इम्पोर्टेंट स्टेप है. बहुत इम्पोर्टेंट है वो करना ही है सबको. लाइक हैंड रेस कर सकते हो इधर जो जो मतलब इधर कर रहा है मेरे साथ में. ओके ठीक है कंटिन्यू करते हैं. इसके आगे एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. प्रोफाइल सेक्शन में जाना है तुम लोग को. फिर इधर से ना तुम्हारा जो प्रोफाइल है ना अभी अभिषेक प्राइवेट रहेगा. अभिषेक हाँ, अभिषेक या तूने जो स्किल बूस्ट वाला बताया ना वहां से एक बार वापस रिपीट कर बिकॉज वो बहुत फास्ट गया है. ओके ओके ओके. एक मिनट में इनकॉग्निटो में खोल के दिखा देता हूँ. तो स्किल बुश में जाने के बाद ना तुम लोग को ज्वाइन का ऑप्शन आएगा. इधर एक ज्वाइन क्लिक करना है. साइन इन नहीं करना है क्योंकि हम लोग ने एक नया अकाउंट बना लिया है. तो इधर ज्वाइन क्लिक करने के बाद साइन इन विद गूगल क्लिक करना है. और इधर से तुमने जो गूगल अकाउंट बनाया रहेगा उसका ऑप्शन आ जाएगा. चला कंटिन्यू उधर से. फिर तुम लोग ज्वाइन कर लोगे ना तो डायरेक्ट होम पेज खुल जाएगा पाथ्स वाला.
हाय और तुम्हारा नाम आ जाएगा, जैसे मेरा इधर अभिषेक आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग को अपनी प्रोफाइल को पब्लिक करना है, तो वी विल क्लिक ऑन द प्रोफाइल सेक्शन हियर। देन इधर जो ऑप्शन आ रहा है ना, बस इसको क्लिक कर देना है। तो इधर पूछेगा शेयर योर बैचेस विथ पब्लिक प्रोफाइल। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम लोग का जो प्रोग्रेस है इस कोर्स में, वो गूगल ट्रैक कर सकता है। अगर तुम्हारा पब्लिक है तो अकाउंट, तो ही, वरना नहीं कर सकता है। तो ये करने के बाद हमें एक लिंक मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तुम लोग कॉपी करके रख लेना। इसको गूगल फॉर्म में भी तुम लोग को पूछेगा कि स्किल बूस्ट का पब्लिक प्रोफाइल पेस्ट करो तुम्हारा। तो इसको कॉपी करके तुम लोग रख लो एक जगह, नोटपैड वगैरह में। सो यार दैट वाज इट। कुछ डाउट्स रहेंगे तो पूछो। आई होप ही वॉज प्रिटी मच क्लियर कैसे स्किल बूस्ट अकाउंट क्रिएट करना है। आई वुड जस्ट लाइक टू समराइज इट। नया गूगल अकाउंट क्रिएट करना, अगेन आई विल रिपीट, नया गूगल अकाउंट क्रिएट करना। ये सारे क्वेश्चंस, इट जस्ट टेक हार्डली टेक्स 2 minutes टू क्रिएट अ न्यू गूगल अकाउंट। अगर तुम 24 सितंबर के पहले वाला कोई भी गूगल अकाउंट यूज कर रहे हो तो तुम्हें क्लियरली एंट्री नहीं मिलेगी कोर्स में। नया ही गूगल अकाउंट क्रिएट करना है। ऐसा भी नहीं कि पिछले साल तुम लोग ने सेम कोर्स किया तो वही गूगल अकाउंट वापस यूज कर लेता हो। नो, न्यू अकाउंट हैज टू बी क्रिएटेड। न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद क्लाउड स्किल बूस्ट पे जाके सिंपली ज्वाइन करना है आप लोगों को विद द न्यू क्रिएटेड जीमेल अकाउंट। नया जो अकाउंट बनाया आपने उसी से लॉग इन करना। आफ्टर दैट द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज प्रोफाइल पे जाके अपना प्रोफाइल पब्लिक कर दो। The main reason for this is, as Abhishek stated, Google will be able to track your progress. अभी ये progress की क्या जरूरत है? तो every week ना लीडर बोर्ड आउट होता है। तो एवरी वीक द लीडर बोर्ड इज आउट। तो किन लोगों ने कितने लैब्स करे हैं, कैसा सब लोग का प्रोग्रेस चल रहा है, एंड वही से टॉप 80 लोग हम लोग चूज करेंगे। वही लीडर बोर्ड से हम लोग टॉप 80 लोग चूज करेंगे। एंड आफ्टर यू मेड योर पब्लिक प्रोफाइल पब्लिक, वहां का जो लिंक है पूरा HTTP से लेके पूरा एंड तक कॉपी पेस्ट करके रख लो। हम जब भी आपको फॉर्म सर्कुलेट करेंगे तभी आपको वो बहुत यूज का है। I hope all the steps are clear. Again, new Gmail account has to be created. फिर बाद में बोलना मत कि यार मैंने फॉर्म भरा, ये किया वो किया, बट मुझे कोड नहीं मिला कोर्स ज्वाइन करने के लिए। अगर पुराना जीमेल अकाउंट होगा तो नहीं होगा तुम्हारा। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द frequently asked questions. So yeah, how many seats are available? Like I stated, total 150 seats available है for SIS GST। 150 लोग कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, पर टॉप 80 लोगों को ही गुडीज मिलेंगे। Second question is, are there any prerequisites needed to participate in the event? So yeah, no prerequisites are needed to participate. Even a seasoned pro or a newbie can participate. As I said, this is a well-documented course. You have to just read, understand, and perform the labs. Third and the most important, I want everybody to listen to this very properly. How will the selection of participants be conducted? Abhi, after we end the session, we will circulate a form. Okay, we will circulate to you a form wherein you have to fill in your email, full name, college, branch, year of graduation, and verify that you have created a Google Cloud Skill Boost account today itself. That is after 24th, yeah, on 24th. And वहाँ पे you have to provide the email address that is connected to the Google Skill Boost account. जो आपने ईमेल से अपना स्किल बूस्ट अकाउंट बनाया है वही ईमेल आपको वहां पे देना है। तो यू विल बी गेटिंग अ डेडलाइन ऑफ टुडे 10 p.m. I think I said 7 p.m. but it's 10 p.m. I will just repeat. Today 10 p.m. की deadline है. We will circulate a form. Those who fill in the forms will only be taken ahead for the further registration process. अगर आज 10 बजे तक हमें 150 मतलब
कितनी भी एंट्रीज आए, 150 एंट्रीज आए, 180 एंट्रीज आए, 250 एंट्रीज आए, डजंट मैटर, उसमें से पहले 150 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है. Top 150 students will only be selected for the further registration process, and rest of the students will be discarded from the registration process. Okay, and after the 150 students are selected, इनमें से भी sorting होगा. Those students who have filled for the slot, who have been enrolling for this Google Cloud program from past 2 years and not completing their core courses, just seats लेके waste कर रहे हैं, those people will be blacklisted. We are going to obviously shortlist the students, state out the names जो लोग 2 साल से बस slots ले रहे हैं but course complete नहीं कर रहे, तो ये साल clearly उन्हें blacklist करने वाले हैं and they will be removed from the entire Google Cloud course registration process. तो फिर 150 में से भी कुछ लोग होंगे जिनको हम blacklist करेंगे जो consecutively 2 years से course complete नहीं कर रहे. And after all this sorting process is done, top 150 participants will be selected. Now, moving ahead, how goodies and swags will be distributed. So, like I said, goodies and swag will be given to only top 80 performers. जो पहले 80 लोग complete करेंगे, उन्हें ही goodies मिलेंगे. Now, if you guys have any sort of doubt, please unmute yourself and ask any questions you have. Anyone, if you are unable to unmute yourself, you can just put it in the chat. If no questions, then please put out thumbs up. अगर सब कुछ clear है, everything is clear to you, please give me thumbs up. Great, I think. तो फिर Abhishek, kindly put out the form link in the chat box, please. Yeah, just a minute. And just open the form link. I'll just go through the form once so there is no Hello. sort of confusion. Yes, hello. Yes, I have a doubt regarding Skill Boost account. Okay. Now I've just joined the Skill Boost account in Google Chrome by adding a new account in my Google account. Yes, Okay. then after joining the Skill Boost account, I have a doubt regarding that how I can make my account public, that Okay. that So Google can trace it. you have the dashboard. अच्छा पहले तो just let me confirm, आपने नया Gmail account बनाया, right? अभी. Yes. Okay. And उसके बाद आपने Skill Boost में भी login किया same Google account से जो आपने नया बनाया. Yes, हाँ join किया. Okay, so then you have on the dashboard these options. Tasks करके एक option होगा, उसके बाजू में profile करके एक option है. हाँ. वो profile option पे click करो. Yes. Then you have the option for make your profile public. Yes. Just that. वो बस click करना है, फिर उसके आगे एक link आएगी नीचे HTTP वाली. पूरी link आपको copy paste करके notepad में रखनी है, because हम लोग form circulate करेंगे बाद में, जिसमें आपको वो link डालनी होगी. Okay. Good to go? Cleared your doubt? Yes. Thanks. Abhishek, can you just fill in the form? I will just once go through the form because I don't want anybody to have any sort of confusion. Yeah. Okay. So, firstly, you have the email placeholder. Guys, please take care of your mic. Okay. So, you've put in your email address.
अभिषेक आई थिंक यहाँ पे हमें अपना न्यू ईमेल, ये वाला ट्रैक वाला ईमेल है राइट, तो यहाँ पे अपने वो ईमेल डालना है जहाँ पे अपने को मेल्स आने चाहिए। ओके ओके या सो यहाँ पे आप अपना वही ईमेल डालना जहाँ पे यू वांट टू रिसीव द मेल्स फ्रॉम अस। कम्युनिकेशन आपका ये ईमेल वाले प्लेस होल्डर पे होगा, तो फिर इसके आगे का जो भी प्रोसेस होगा, जो भी मेल्स होंगे आपको ये ईमेल पे आएंगे। तो फिर यहाँ पे अभी जो आपने न्यू ईमेल अकाउंट क्रिएट किया है ना, उसका नहीं डालना है। अभी अभिषेक ने यहाँ पे SISGST.AC वाला डाल दिया, आप अपना पर्सनल भी डाल सकते हो या कॉलेज का एडू वाला भी डाल सकते हो, GST वाला भी डाल सकते हो। देन फुल नेम, कॉलेज नेम आप अपना अपना भर दीजिए, ब्रांच इन योर, देन मूविंग अहेड टू ओके moving ahead to gender. Abhishek, let's just go ahead and explain the important part to them. Yeah, year of graduation, whatever your year of graduation is, then please verify that you have created a new account on Google Cloud Skill Boost on and after September 22nd. ठीक है, अभी इन 2-3 दिनों में बनाया हुआ अकाउंट चाहिए। तो यस, आई वेरीफाई आई हैव क्रिएटेड अ न्यू अकाउंट। देन यहाँ पे आपको अपना जो नया बनाया हुआ ईमेल अकाउंट है, ओके, नया बनाया हुआ अकाउंट है, वो अकाउंट आपको यहाँ पे डालना है जो आपकी गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट से कनेक्टेड है। तो फिर अभिषेक ने अभी अभिषेक टी न्यू क्रिएट किया था, तो उसने वो वाला डाला। I think the form is pretty much self-explanatory and I have also gone through it once. So I hope majority, मतलब सब लोग को ही सब कुछ अभी clear है. Just give me a thumbs up. Okay, great. I think we have also answered all the doubts. If anything, you can, I have to just give you a small instruction. कुछ भी doubts है, any sort of doubt, do not personal DM anyone. Just put it in the group. अगर तुम shy हो, जो भी हो, उतना मत सोचो, because अगर आपको लगता है कि बाकी लोगों को आता रहेगा, ये डाउट काफी सिली है, तो ये सब सोचो मत। just focus on getting your doubts clear. Okay, कुछ भी है तो फिर अपना जो ग्रुप है वहां पे डाल देना, and all the coordinators and everybody will be there to clear your doubts. And again, ये हम लोग ने अभी फॉर्म चैट बॉक्स में डाला है। टुडे इज द डेडलाइन ऑफ 10 PM। 10 PM तक ही हम लोग, जितने लोग रजिस्टर होंगे उतने लोगों को अंदर फॉर द फर्दर रजिस्ट्रेशन लेंगे, और वो बच्चों में से ही टॉप 150 हम लोग सिलेक्ट करने वाले। All right, I think we have completed everything and we are at the end of the session. I took exactly Hello. 45 minutes out of 10 minutes, तो हमारा waiting period ही था, so we sort of completed in 35 minutes. So yeah, it was crisp and I hope तुम्हें सारे doubts cleared हैं, and I hope everybody is quite excited to begin on this journey and learn in tons about cloud computing. Hello, excuse Thank me. you so much everyone for joining for today's session. I hope to see you. Hello. Hello, yes. Someone is, yeah. ये लेफ्ट वाला QR कोड है ना, विकिपीडिया का है, मतलब वहां पे रिडायरेक्ट कर रहा है ये। ओके, जो मैंने लिंक भेजी है ना चैट में, फ्रॉम दैट यू कैन join the chapter page. ओके ओके। Thank you for informing. You all can leave. Everything that was important has been. Is anyone speaking? Yeah, it's me, Avnish. So I just wanted to ask, we can fill the form with any Gmail ID, right? Or the specific new one? Yes, yes, yes. जो स्टार्टिंग का ईमेल प्लेस होल्डर है ना, वहां पे आपको वो आईडी डालनी है जहां पे यू वांट अस टू कम्युनिकेट टू यू, क्योंकि इसके आगे के Oh, जो भी sorry. No, या टेल मी। I wanted to ask, वो जो फॉर्म खोलते हैं ना, वो कोई भी अकाउंट से खोलेंगे चलेगा ना? हाँ हाँ, कोई भी अकाउंट से खोलोगे चलेगा।
बस वो ईमेल वाले स्लॉट में जिस ईमेल से कम्युनिकेशन करना चाहिए वो ईमेल डालना है। हाँ, एंड द लास्ट वाले स्लॉट में जो आपने नया ईमेल बनाया है जो आपके स्किल बूस्ट से कनेक्टेड है वो डालना है। या Okay. थैंक यू। Welcome, not an issue.